Jai Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So today we're reading from Caitanya Caritamrita Adi Lila, chapter 2, text 98. Angsa Shakta Vesha Rupe Dve Vidavatara. Come on. Where, the board, did nobody put it on the board? Who's the board writer? And this is the way we're going to conquer the whole world, right? Prabhupada liked military efficiency. Try to understand. Military efficiency. He wanted this movement run military. Do you know that? Not just the ashrams. Of course, brahmacharya ashram means military life. Those who can't make it in military life, ashram is not the right choice. But at the same time, householders are not supposed to be what we say in America, loosey-goosey. You know, like the neck of a goose, you know? Neck of a goose is loose, you know? Loosey-goosey. They're all supposed to have discipline, they're supposed to have sadhana, they're supposed to have regulation in their life. In reality, the man goes to work, works like an ass. Comes home, may or may not shower. Puts on his street clothes again, because that's his comfort zone. It's unthinkable when Prabhupada was on the planet. Unthinkable. No one wore street clothes when Prabhupada was on the planet. Nobody. Okay, in 1966, they were still wearing street clothes. That doesn't count because they were not full-on disciples yet. They were just beginning of the Krishna consciousness. You ever seen the funny videos of Prabhu's, they're sitting there, the men sitting there with long hair. They're still in the karmic clothes, long hair. Gargamuni, you know, Gargamuni sitting there. I think maybe he had a beard also, sitting there. It's really funny. He's trying to explain the philosophy. They're just talking nonsense, you know. Any yellow boy could speak the philosophy better than he was. At some point, he stops, makes a funny face. Realizes, I don't think I'm explaining properly. You realize the light bulb came on, you know. It's funny. Have you ever seen that video? He's talking complete nonsense, and then he stops and is thoughtful for a moment,
और वो बीच में रुकते हैं और कुछ सोचने लगते हैं थोड़ी देर के लिए। Obviously, his thought was, I don't think I'm explaining correctly. और You फिर know, वो Krishna within the heart is screaming out, "Hey, why are you telling your nonsense in the name, in my name? What is this nonsense?" You know. वो जो है सोचते हैं बीच में रुक के कि नहीं मैं शायद Shade सही Guru. बोल रहा हूँ। और कृष्ण जो उनके हृदय में बैठे हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम मेरे बारे में ये क्या बकवास बोल रहे हो। I can't even begin to remember what he was saying because it was all nonsense, you know. मुझे No. याद भी नहीं कि वो क्या ऐसा बोल रहे थे क्योंकि वो एकदम खराब बोल रहे थे। Okay, we have the on the board now. Yes. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidvachara. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidvavatara. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidhavatara. Balya Pogodan Dharma Duita Prakara. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidvatara. Balya Paganda Dharma Hui Ta Prakara. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidhavatara. Balya Paganda Dharma Duita Prakara. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidhavatara. Balya Paganda Dharma Duita Prakara. Angsha Shakya Vesha Rupe Dve Vidvatara. Balya Paganda Dharma Duita Prakara. Come on. Louder. Come on. Next person. Don't miss a beat. It's not a stop sign. Come on. Chant and keep the rhythm going. Next.
Angsha अंश of the plenary expansion. पूर्ण अंश So the word plenary is important. तो जो शब्द प्लेनरी है वो अंश है वो महत्वपूर्ण है Plenary means full. और जब शब्द प्लेनरी है उसका अर्थ है पूर्ण अंश Sakti Avesha सत्यावेश of the empowered. सत्यावेश Empowered. So generally, Saktivesh is referring to jivas. सत्यावेश जो है वो साधारण तौर पर जीव को संबोधित करता है For example, Prithu Maharaj, उदाहरण तौर पर पृथु महाराज he was jiva, he was not Vishnu Tattva. वो जीव थे वो विष्णु तत्व नहीं थे But he was acting with full avesh. और वह जो है पूरे आवेश के साथ कार्य कर रहे थे Probably you know the story आपको लीला पता होगी उनकी about his encounter with Bhuma Devi. उनका जो बातचीत थी भूमि देवी के साथ That's an amazing narration. We should say narration instead of story. Story implies fiction, is not his fiction, is true history. तो ये जो है इतिहास है जब वो भूमि देवी से मिले थे तो ये हम इसको स्टोरी कहते हैं पर वो कोई काल्पनिक नहीं है वो है इतिहास है It's a relishable story, और ये बहुत ही मधुर कहानी है but time does not permit for me to tell the whole story. इस समय इस उचित समय नहीं है मैं उसके बारे में चर्चा करूँ Basically, she was not surrendering after Prithu Maharaj resumed all the sacrifices and yajnas that were supposed to be offered to Lord Vishnu, and she was amongst the recipients. तो वो जो सैक्रिफाइस जो कर रहे थे जितने भी बलिदान वो कर रहे थे पृथु महाराज उसमें भाग्यदार वो भी एक थी But she was not cooperating. लेकिन वो जो है साथ नहीं दे रही थी Prithu Maharaj says, "We've resumed all the yajnas. We are not producing any grains or fruits or anything." सारे यज्ञ वापस जारी कर चुके हैं लेकिन आप जो है हमारे लिए सारे धन No, नहीं I don't उत्पन्न कर feel रही like हैं। it. I don't feel like it. तो मुझे ये अच्छा नहीं है Soaking, you know the word soaking? Soaking, pouting. I don't feel like it. तो वो ऐसे बोले कि जो धरा है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता I've been abused and insulted. I'm not going to produce anything. मुझे जो है बहुत ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है इसलिए मैं कुछ भी नहीं उत्पन्न करने दूंगी Prithu Maharaj says, "You have to. It's your duty. तो महाराज ने कहा नहीं आपको करना होगा ये आपका You got your full share of the yajnas. आपको यज्ञों का अपना हिस्सा प्राप्त हुआ है Now stop this nonsense." तो अब ये खराब चीज रोक दो He's the emperor. His duty is to see that everybody's taken care of. तो वो राजा है उनका ये कार्य है कि वो सबको समझाए कि उनका कार्य क्या है She says, "No, it's not my problem. They've been too sinful. They've neglected me for so long. I don't feel like it." तो धारा कहने लगी नहीं ये लीला मेरे को अच्छा नहीं लगा और मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया है इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है Prithu Maharaj says, "You have to. It's your duty. We've given you your share of the sacrifice. Stop this nonsense." He has to get heavy with her, you know. आपको यज्ञ का हिस्सा प्राप्त हुआ है जो आपका नियमित था इसलिए अब आपको देना होगा उसको उत्पन्न करना होगा No, I'm not going to. धारा कहने लगी नहीं मैं नहीं करने वाला Then he says, "You have. If you don't resume producing fruits and grains and foodstuff for my praja, you know praja, आप अगर तो वो कहने लगे कि तुम महाराज के यदि आप मेरे प्रजा के लिए दोबारा अन्न Citizenry. अन्य सामग्री नहीं dependent, प्रदान करेंगे, dependence. The king is supposed to take care of the people. तो जो प्रजा होती है वह राजा के अंतर्गत रहती है और राजा का कर्तव्य है उनका ध्यान The रखना English word is munificent. You know the word munificent? Very grand.
very big-hearted, very generous, very dutiful, completely controlled by the laws of karma, not karma, laws of dharma. तो जो राजा होता है वो बहुत ही दयालु होता है सभी अपने प्रजा के प्रति और वो पूरी तरह धर्मों के जो नियम होते हैं उसके अनुसार काम करता है. But we see that most rulers today, they're not interested in the welfare of the people, not at all. लेकिन हम देखते हैं आजकल के जितने भी जो राजा हैं ये जो रूलर्स हैं वह लोगों की हित के लिए Oftentimes they're dictators. ज़्यादातर वो लोग डिक्टेटर होते हैं. They want to consolidate their power. और वो जो है अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं. Krishna said it most perfectly 5,000 years ago. 5,000 years ago, Krishna's given infallible, perfect commentary on modern politics. Yes? भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व ये कहा है और जो कहा है वो एकदम आज के जो आधुनिक जो पॉलिटिक्स है उसके राजनीति के उसके ऊपर कहा है. Hiranyakasipu mentality. हिरण्यकश्यप का जैसा विचारधारा थी. Only chota, जो कि बहुत ही छोटी सी थी. germ-sized Hiranyakasipus. They're nothing, but in there, it's called, the psychological term is delusions of grandeur. तो वो हिरण्यकश्यप की मानसिकता जो एकदम कीड़े के समान थी जो था और उसको मोह था कि मैं बहुत ही विशाल हूँ. There's one national leader today who is mad. He's gone mad. Falsigo. एक अभी ऐसा राजनेता भी है जो कि एकदम एक देश का जो कि एकदम पागल हो गया है. So puffed up, he's ready to go to war with the whole world. और वो इतना पागल हो चुका है कि वो पूरे विश्व के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है. Madness. ये है पागलपन. Maya Pritagyan. माया है प्रत्यज्ञान. Asuram Bhava Masvita. आसुरम भाव. Prabhupada was asked, why doesn't Krishna, advent himself today? प्रभुपाद से पूछा गया कि अब कृष्ण क्यों नहीं अवतरण लेते. Prabhupada says, he has left it up to this Krishna consciousness movement. प्रभुपाद जी ने बताया कि क्योंकि उन्होंने यह कार्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किया. Haribol. And I've told you several times, he wrote to me personally. और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पे लिखा था. Nothing can stop this Krishna consciousness movement. कुछ भी जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नहीं रोक सकता. Not nuclear war or whatever. Even nuclear war cannot stop this. तो परमाणु युद्ध भी हो जाए वो भी इसको नहीं रोक सकता. Nowadays, in the news, they're all talking about World War III. आजकल जो है बाहर सभी जगह तीसरे विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं. China versus the world, most of the world. और चाइना की तरफ से ये सब जगह. So this is madness. तो ये जो है पागलपन है. Now, the United States has a defense treaty with Japan. और अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने जो है जापान के साथ संगठन बना लिया है. That means if there is war breaks out between the United States and China, which it might, और अगर इसका ये अर्थ है कि यदि यूएस और चाइना के बीच में यदि युद्ध हो जाए, then Japan may jump in because there's a defense treaty, you see. और अगर ऐसा हुआ तो जापान भी इसके बीच में आएगा क्योंकि ये उनके बीच में ऐसा संगठन है. So what has it got to do with Krishna consciousness? तो इसका क्या लेना देना है कृष्ण भावनामृत से? Krishna says perfectly in the Bhagavad Gita 5,000 years ago. कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है भगवद गीता में 5000 वर्ष पूर्व. The asuras, they're engaged in horrible, unbeneficial works. जो असुर होते हैं वह ऐसे घोर पापमय कार्यों में लगते हैं. Meant to destroy the world. जो कि पूरे विश्व का संहार करने के लिए. There's a saying in America, if the shoe fits, wear it. एक कहावत है अमेरिका में कि यदि जूता आपको फिट हो रहा है तो Asuram bhava masrita. यह है आश्रम भाव. Asuras. Madness. It's the same mentality as Hiranyakasipu, only on a small scale. तो ये जो मानसिकता है ये वैसी है जैसे हिरण्यकश्यप की थी और बस छोटे तौर पे है. Aham bhogi. हम भोगी. Aham ishvara. हम ईश्वर. Madness. यह है. But then everybody, all the asuras and things like that, they must be cut down by time. ये जितने भी असुर हैं ये सब English word. ये जाएंगे समय के प्रभाव.
English word is indefatigable. That means unstoppable. तो एक जो अंग्रेजी में उसको शब्द को कहते हैं indefatigable, जिसको अर्थ है कि उसको रोका नहीं जा सकता समय। Napoleon was such a big dictator, such a big man. नेपोलियन जो कि बहुत ही बड़ा राजनेता था और बहुत ही बड़ा व्यक्ति था। Also, Maya Pradyagan. पर उसका भी माया प्रगट ज्ञान था। Hollywood made a documentary on Napoleon, docudrama, तो एक डॉक्यूड्रामा बताने जो है नेपोलियन के खिलाफ, where he was trying to conquer Russia. तो वो किस प्रकार जो है रशिया को अपने काबू में Not so easy, not so easy. So जो कि इतना आसान नहीं था। the film showed how they were dragging. He went into Siberia. Big mistake in the wintertime. This is Maya Pradyagan. तो उसमें जो ड्रामा था उसमें दिखाया गया था जिस प्रकार वो साइबेरिया गया था। They couldn't even move the cannons through the snow. They're all suffering so much, you know. तो ये जो है मुंडे माया प्रगट ज्ञान है, उस स्थान पे वो लोग अपने जो तोप थी उनको भी नहीं चला पा रहे थे क्योंकि वहाँ ठंड। So much delusion of grandeur. तो ये जो है इतना He lost the war. He lost it. He could not fight. They're used to that. See, that was their territory. But Napoleon's men, they were from a different part of Europe. They were not used to. It was shown very nicely, a clip, you know. I saw only a clip. उस ड्रामा में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया था कि जो रशिया के जो लोग थे वो लोग मतलब The men were soldiers in their जो वहाँ साइबेरिया में ठंड से लेकिन यूरोप से आए हुए जो नेपोलियन के साथ almost up to साथी थे वो लोग नहीं almost up to their waists in snow, and the cannon's very heavy, but they're trying to drag them through the snow. Madness. तो इतनी बर्फ थी वहाँ पे साइबेरिया में, इतनी ठंड थी और उसके बीच में वो अपने तोपों को ले जा रहे थे, बहुत ही पागल थे। Maya Pradyagan. So no knowledge is stolen by illusion. तो उनका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया गया। Then Prabhupada tells, in case you're wondering why am I telling all these things, Prabhupada talks about Napoleon. प्रभुपाद जी नेपोलियन के बारे में बताते हैं Such a big shot. कि वो इतना बड़ा व्यक्ति थे, All cut down by time. लेकिन वो भी जो है See, हटाया Krishna's गया समय के द्वारा। Kalarupa. If you want to know what time personified looks like, all you got to do is look at his beautiful blackish form. यदि आप देखना चाहें कि काल जो है उसका व्यक्तित्व कैसा है तो आप देख सकते हैं। Kalarupa. Kalarupa is standing right in front of you. काल रूप है वो आपके सामने समझते हैं। He destroys everything तो वो जो है सबका संहार करते हैं in the long run. लेकिन But लंबे दौरान। Kala means time, so it may take some time, but he will destroy everything. तो काल का अर्थ है सबका संहार करते हैं भगवान। So Napoleon was completely defeated. तो नेपोलियन जो है पूरी तरीके से हरा दिया गया। Now don't get on my case about it. Prabhupada tells. तो ये मैंने भी प्रभुपाद जी बताए हैं। He'd lost the war. He was a prisoner. वह युद्ध हार गया और फिर वो एक कैदी बना। And he told his captors, I'm thirsty, please bring me some water to drink. और वहाँ पे जो अन्य लोग थे उनको उसने कहा कि मेरे को I'm telling you, मेरे लिए पानी लेके आइए। don't blame me, Prabhupada tells this. तो मुझे मत कहिए कि प्रभुपाद जी ये बोलते हैं। They brought him horse urine. वो उसके लिए एक घोड़े का मूत्र लेके आए। He drank it thinking it was water because he was probably had a fever, you know. और उसने उसको पी लिया ये सोच के कि पानी था क्योंकि उसको बुखार था, उसको पता नहीं चला। Big asura इतना बड़ा असुर dies after drinking horse urine. का मृत्यु हुआ एक घोड़े के मूत्र पीने के बाद। Such is the end of such great fools. ऐसा जो अंतिम हुआ एक बड़े Cut down by Kalarupa. Cut down. काट दिया गया पूरी तरीके से। No chance of survival. No chance of survival. कोई उनका इसका कोई मौका So नहीं। the little Chota demons of 2020 are nothing in comparison with Napoleon. And he went down. 2020 के जो छोटे-छोटे असुर हैं ये कुछ भी नहीं है नेपोलियन के साथ। All the asuras, they'll all go down. All of them. जितने भी असुर हैं वो सब कोई हरा दिए जाएंगे काल द्वारा। Prabhupada also says that when there's political trouble, प्रभुपाद ये भी कहते हैं जब राजनीति में दिक्कत आएगी, politicians will start a war. जो राजनेता है वो अपने आप में युद्ध शुरू कर देंगे। If you've seen on the net, in the China Sea, the U.S. ships and the China ships, they're right next to each other. आप देख सकते हैं नेट पे भी कि जो You've चाइना seen? की सी है वहाँ पे They're right. US के शिप और चाइना के शिप दोनों
they're way within firing distance. So U.S. ships, they're in the same space. यूएस के जो शिप है वो भी वहीं मौजूद थे जहाँ पे चीन के जो Somebody's going to lose their cool दोनों एक ही स्थान पे मौजूद है और कोई ना कोई एक तो and जो है start firing on the अपना enemy. धैर्य खो बैठेगा और दूसरे पे But आक्रमण शुरू कर देगा। if Donald Trump starts the war, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को आरंभ किया he'll be a hero. The Americans will back him all the way. तो वो जो है हीरो बन जाएगा और जितने भी अमेरिकन ब्रांड हैं वो सब They don't like China at this point. Everybody knows the coronavirus came from China. Everybody knows. मैं इस बिंदु को रखना तो नहीं चाह रहा लेकिन सब जानते हैं कि चीन से ही ये कोरोना वायरस आया है। So the situation of these asuras is like ants in the middle of a burning stick. तो इनकी जो ये जो असुर हैं इनकी स्थिति एकदम इस प्रकार है कि माचिस है तो जल रहा है दोनों तरफ से तो वो बीच में स्थित है। The stick is burning on both ends, so the ants are in the middle of the stick, and the stick is burning on both ends. तो वो जो है एक स्टिक के बीच में खड़े हैं जिस स्टिक के दोनों साइड से उसको जला दिया गया है। And the situation of the modern demons. ये है स्थिति जो अभी असुर है उनकी। So starting a war with India and the United States simultaneously, that's total madness. युद्ध आरंभ करना यूएस और यहाँ चीन में ये पूरी तरह पागलपन है। At any moment, a war may break out between India and China, and at the same time, at any moment, a war may break out between United States and China. But the man is so deluded, Maya Yapridigan, so deluded. किसी भी समय युद्ध हो सकता है, छिड़ सकता है भारत और चीन के बीच में या यूएस और चीन के बीच में। He doesn't know what he's doing. He's digging his own grave. लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि वो नहीं जानते कि वो खुद ही की कब्र खोद रहे हैं। Such a demon like that cannot survive. ऐसा जो असुर है वो कभी जीवित नहीं रह सकता। Even his own colleagues in China, there's some disturbance. They don't like what he's doing, but he's consolidated. This is what demons do: consolidate the police, consolidate the army behind him. Maybe. चीन में जो उनके आसपास और खुद ही के जो लोग हैं वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा जो एक व्यक्ति कर रहा है। The common people are more intelligent than he is. They can see that he's on a course of destruction. The common people can see better than this. So the nature of false ego, so puffed, they can't see what he's doing. लेकिन जो साधारण लोग हैं वो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये जो नेता है या इतना घमंडी हो गया है तो वो समझ नहीं पा रहा। There is one hope for China. लेकिन एक आशा है चीन के पास। Do you know what that is? क्या आप जानते हैं क्या है वो आशा? Devotees. हाँ। People say, "Oh, what can a few Hare Krishnas do?" लोग कहते हैं अरे ये कुछ इतने से हरे कृष्णा वाले क्या Well, कर सकते हैं? You know, what can you do to save the world? What are you doing to benefit the world? वो पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे विश्व के लिए? Oh, a few hundred Hare Krishna devotees can keep China, billions of people, from getting wiped off the map, incinerated. क्या ये कुछ 100 की संख्या में भक्तगण हैं ये पूरे चाइना के इतने बिलियन जनसंख्या को बचा सकते हैं? I don't know how many devotees are in China, but there's enough to stop the entire nation from being destroyed. मुझे पता नहीं कि चीन में कितने भक्त हैं लेकिन वो इतने Because they're devotees of the Supreme Controller. Krishna will not allow. Okay, there might be a few casualties, you know, चीन को पूरी तरह बर्बाद होने से रोक सकते हैं। but all the Chinese devotees are very wonderful. If you see them in Mayapur, you know, they're very, very wonderful devotees. There was a big disturbance this year in Mayapur. Probably close to 100 Chinese showed up for Gurpurnima. They were not allowed to enter the Dham because of Corona. They were confused, but they were heartbroken, but at the same time also angry. Well, what could the administration do? They didn't have any choice, you know. If they had come in, who knows how many devotees would have caught the coronavirus, you know. So the common people in this age of Kali, they're just like the ants in the middle of the stick also.
डंडी पे है जो दोनों तरफ से आग लगी। One side of the stick, the coronavirus is burning. एक साइड से जो है कोरोना वायरस चल रहा है वो, The other side of the stick, war is coming. और दूसरी तरफ से जो लकड़ी है वो जल रही है युद्ध की। Probability is very high. तो इसकी बहुत ही ज़्यादा probability है। You know, God bless Mr. Trump, but you know, he might start the war. Why? ट्रम्प भी हो सकता है जो पूरे विश्व में युद्ध आरंभ करें। He's behind in the polls. The election is in November, you know. तो Beginning. अब जो वहाँ इलेक्शन है जो होने वाले हैं वो अभी नवंबर में है। If he started a war with China, all of a sudden his popularity would skyrocket. और यदि उसने युद्ध आरंभ किया चाइना के साथ तो उसकी जो फेम है वो बढ़ जाएगा बहुत ही। It's not just my opinion. Prabhupada says, you know, I talk about some things that might seem like, okay, this is mundane. No, Prabhupada talks about these things. ये केवल मेरा मत नहीं है, ये प्रभुपाद जी का मत है, प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में। Prabhupada states clearly when a head of state is in trouble politically, he starts a war. Just see. Prabhupada says it. प्रभुपाद का यदि कोई जो राजनेता है वो अगर एक राजनीति की तरफ से कुछ दिक्कत है तो वो युद्ध आरंभ कर देता है। Mr. Trump might just start the war. जो मिस्टर ट्रम्प है वो भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। All it takes is for some hothead to start firing on the Chinese ships. If you look at the picture in the picture on the net, you know, the ships are right next to each other. Somebody could lose their cool and start firing. तो यदि आप नेट पे भी ऐसी पिक्चर देखेंगे तो वो जो यूएस के और चीन के जहाज हैं वो एक दूसरे के एकदम सामने खड़े हैं तो कभी भी किसी का And the same thing with India. India might lose its cool at any moment. यही चीज भारत के साथ है, भारत भी कभी भी अपना धैर्य खो बैठ सकता है। So madness. ये है पागलपन। The whole situation is mad. तो ये पूरा जो है पागलपन है। Because there's no Saktavish avatar like Pritha Maharaj to set things straight. क्योंकि अब जो है पृथ्वी महाराज के भांति कोई शक्ति अवतार नहीं है जो चीजों को सही कर सके। When his father, King Venu, the super demon, और उनके जो पिता थे वेण वो बहुत ही बड़े असुर थे। was killed by the will of the Brahmins जो कि मारे गए थे ब्राह्मण की। because he would not offer any jagnas. क्योंकि वो कोई यज्ञ नहीं कर रहे थे। He scolded the Brahmins. वेद जो है ब्राह्मणों को डांटता था। You fools, you do not even know the conclusion of the Vedas. आप मूर्ख He said लोग like आप that. ये नहीं जानते कि जो वेदों का सार क्या है। You're chanting Vedic mantras, you claim to be authorities on Vedas. You don't even know the conclusion of the Vedas. आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, आप बोलते हैं हम वेदों को जानते हैं, लेकिन आप वेदों का सार नहीं जानते। The Vedas say that the king is the sum total of all the devas. So stop. वेद कहते हैं कि जो राजा है वह सारे वेदों का ही। Stop all your offerings to the devas and offer only to me. Oh, that's very. सारे देवताओं का वही प्रतिनिधित्व है, तो इसीलिए जितने यज्ञ हैं उनको रोक दीजिए और राजा का पूजा शुरू कीजिए। So the Brahmins got together. What should we do? What should we do? और जितने ब्राह्मण थे वो सब इकट्ठा और सोचने लगे क्या करें अब। Together they shouted, "Kill him! Kill him!" सब जने चिल्लाने लगे, मार दीजिए इसे, मार दीजिए। Merely by shouting, "Kill him! Kill him!" सब बोलने लगे इसे मार दीजिए, मार दीजिए। He died. और सिर्फ इतना बोलने मात्र से वो मर गया। They killed him just by shouting, "Kill him! Kill him!" और उन्होंने उस वेद राजा को मार दिया सिर्फ इतना बोल करके उसे मार दीजिए, मार डालिए। Don't mess with Lord Vishnu or his Saktavish avatars. Don't do it. कभी भी जो है आप पंगा मत लीजिए भगवान विष्णु या उनकी शक्ति आवेश। You're not going to win. आप कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। Delusions of grandeur. So, the same mentality on a smaller scale today, modern politicians. What's the difference? Please tell me. तो वो जो है अपने मन से मोहित हो चुके थे, तो यही मानसिकता आज के लोगों में भी मौजूद है असुरों में। One was a big demon, today they're small demons. Nothing. उस समय बड़े थे, अभी जो है अभी छोटे-छोटे असुर हैं। Madness. To go to war with the whole world, madness. Not the whole world, most of the world. तो अधिकांश लोग जो है पृथ्वी पे सब जगह जो है पागलपन में। Even North Korea is not very happy about what China is doing, you know? जो So नॉर्थ कोरिया है वो भी इतना खुश नहीं है जो चीन कर रहा है उसके साथ। Because they've got the weapons, and they have a handful of nuclear weapons. They have about 600 nuclear weapons, and they're feverishly trying to increase their arsenal. उनके पास जो है बहुत सारे परमाणु बम भी रहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। Aham Bhogi, और वो बोलते हैं हम भोगी, Aham Ishvara. हम ईश्वर। See, I've got now 600 nuclear weapons. वो बोलते हैं अब हमारे पास एक 600
Soon I'll have 2,000. Very envious, you know. वो बहुत ही ईर्ष्यालु हैं। Russia has over 6,000 nuclear warheads. रशिया के पास लगभग 6,000 न्यूक्लियर The United States परमाणु बम हैं। also has over 6,000 nuclear warheads ready to go. उनके पास भी जो है 6,000 ऐसे परमाणु बम हैं और वो I forget the numbers, how many India has. Quite a few. The statistics are given on that, you तो आप know. लोग जो है देख सकते हैं कि भारत के पास भी कितने हैं, ये सब बता रखा है। You're not fooling around. तो ये जो है बता रखा है उसमें इंटरनेट पे। Madness. ये जो है मूर्खतापूर्ण वो कार्य कर रहे हैं, ये पूरी तरह से पागल काम है। So then, but what about devotees, you see? A few hundred devotees can save billions of Chinese, you see? तो कुछ सौ की संख्या में भक्त भी भरे हों, लेकिन वो इतने बड़ी जनसंख्या जिनकी उसको बचा सकते हैं। If India and the United States simultaneously attacked China, they could wipe China off the map. Billions of people in one a few shots they could wipe China off the map. एक साथ आक्रमण करेंगे चीन पे, जो चीन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। Sometimes people will ask you, what can you Hare Krishnas accomplish? You're only a few thousand of you in a world of billions. कभी-कभार लोग पूछते हैं कि आप लोग कुछ सौ की संख्या में इतने से भक्त हैं, वो क्या कर सकते हैं? You university preachers, you tell them. आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में Oh, प्रचार करते हैं, a few hundred Hare Krishnas can save billions of Chinese from कुछ सौ की destruction. संख्या में हरे कृष्ण वाले पूरी बिलियन जो संख्या है जनसंख्या, If it weren't for the presence of devotees, China might get bombed into ashes, flattened, you know. It could happen, but the devotees could save billions of people, you see. वहाँ पे अगर भक्त नहीं होते तो पूरा चीन को जो है बम से वो ध्वस्त किया जा सकता था, लेकिन वहाँ भक्त मौजूद हैं, वो बचाते हैं इतनी बड़ी Ladini Shakti. Because the devotees of the Lord are under Ladini Shakti. तो वो जो है संरक्षण में है लाल शक्ति। Oh, she likes that. तो उनको ये पसंद है, It's a fact. यही तथ्य है। They're empowered. And besides, Caitanya Mahaprabhu is Radharani. और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है। So this whole movement is under the jurisdiction and control of Radharani. ये पूरा आंदोलन श्रीमती राधा रानी के पूर्णतया अंतर्गत में है। Sri Krishna Caitanya, श्री कृष्ण चैतन्य, Sri Krishna Caitanya, श्री कृष्ण चैतन्य, Radha Krishna Nahayanya, Radha Krishna Nahayanya. राधा कृष्ण नारायण। So Chaitanya Mahaprabhu is Radharani and Krishna combined together. And mostly Radharani, quite frankly. और चैतन्य महाप्रभु जो है वो सम्मेलन में दोनों कृष्ण और राधा रानी के और Is ज़्यादातर जो है उसमें राधा रानी का famous and love and compassion. जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है अपने प्रेम और करुणा And his golden color is Radharani. और उनमें उनका जो Therefore we say Gauranga, 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 Gauranga. That's Gaurangi. तो ये जो है ये गौरांगी को ही Gaurangi means Radharani. गौरांगी यही है। So the famous mercy, compassion, and golden color of Mahaprabhu is Radharani. तो जो ये कितनी करुणा है ये सब राधा रानी से ही है। There's a little bit of Krishna somewhere in the mix. कृष्ण भी थोड़े अंश में I don't know if you could say 50%. It seems like, I don't think you could say मुझे 50%. नहीं लगता कि 50% दोनों होंगे। His mercy, his qualities, all his famous qualities, that's all Radhika. ये चीज महाप्रभु जितने भी करुणा है जितने गुण हैं ये सब उनकी राधा His compassion, his love, उनकी जो करुणा है उनका जो प्रेम है his desire to spread Krishna consciousness all over the world. उनकी इच्छा है इस प्रचार करने Not का, just all over the world, all over the three worlds, Bhurbu Vasva. तीनों लोगों में इस प्रचार करने की जो इच्छा है कृष्ण भावना में This movement is famous all over the three worlds, you इस know. आंदोलन में ये तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। You might say, Maharaj, come on, you know, आप कह सकते हैं महाराज आपकी क्या you're really, really exaggerating now. ये तो अतिशयोक्ति है। You're diving off the deep end. आप जो है काफी Really? क्या है सब ऐसा है You think so? क्या आपको ऐसा लगता है? Prabhupada told us the devas, that means the demigods on the higher planets, प्रभुपाद ने कहा जो देवतागण हैं जो ऊपरी लोगों में हैं they desperately want to take birth in this Hare Krishna movement here on earth. वह बहुत ही
I'm not making this up. Maybe you can find it in Vedabase. He said there's a queue on the higher planets. The devas are in a queue because there are not enough wombs available for them to come down. No. There's a queue of devas trying to come down and take birth in this movement. Why they want to take birth in this movement? Somehow or other they know about the potency of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, Bhur Bhuvasva. So is this movement famous all over the three worlds? Yes or no? And the lower planets, the demons also, they know. Prabhupada told us that demons are coming up from the lower planets and taking birth on this planet. He said that. Some people say like that also. Some non-devotees say like that. Demons are coming up from the lower planets and disguise themselves as human beings, certainly. And they become very powerful in this world. That's why they come here, because there's a place where they can enjoy lots of power without obstruction. So demons coming up, and so what is their favorite business? Try to stop this Hare Krishna movement. But nothing can stop this Hare Krishna movement, not nuclear war or whatever. Haribol. It's Prabhupada, not me. So, Saktivesh Avatar is a very powerful position. Pritham Maharaj, he was a Saktivesh Avatar. So when Bhumi refused to produce any fruits and grains, vegetables, Pritham Maharaj says, stop it. If you don't produce, I'm going to kill you. He's the emperor, you know. She says, you can't kill me. She smiled. She looks at him with a sarcastic smile. You can't kill me because I'm a woman. He's so angry, he says, I don't care. I'll kill you anyways. Then she's feeling some heat now, you know. She says, but you've forgotten that I'm the earth. I'm just not an ordinary goddess. I'm the earth personified. You've forgotten. If you kill me, then the whole earth will just crumble into dust. Finished. Because I am the earth. He says, I'm not worried about that. I'm not concerned. What? He's not concerned that the whole planet over which his emperor is going to crumble into dust and blow away in the wind? He's not worried about it? He says, I will become the earth. Personally. And I will do all the things you're supposed to do. See, the point is this, Saktivesh, he had the power to do that. But he was Jiva, so this is all to understand the power of the Jiva, Saktivesh. And the great acharyas is who send in this world also Saktivesh, another type.
we accept that Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati, Bhakti Thakur, all Saktavesh. हम मानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर सभी शक्तियाँ descended into this world जो अवतरण लिए थे इस संसार में. Golokara Premadana Harinama Sankirtan. 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 The one Chaitanya Mahaprabhu descends this world, he comes with all his confidential associates. All our acharyas, they are confidential associates of Chaitanya Mahaprabhu. Sadguru Swami, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, all of them are confidential associates of Chaitanya Mahaprabhu eternally. Because I've explained previously that the Sankirtan party, for those who are devoted to Chaitanya Mahaprabhu, the Sankirtan party is another portion of Goloka Vrindavan. All the devotees of Chaitanya Mahaprabhu are eternal associates. Everyone sitting here today, also eternal associates of Lord Chaitanya and Nityananda. We're going to have personal association with Sadguru Swami. We're going to have personal association with Sadguru Swami. We're going to have personal association with Swarup Damodar, Lord Chaitanya Nityananda, all the confidential associates of Chaitanya Mahaprabhu. We are going to have there very soon. Blink a few times, we'll have their association. Directly. You might say, Maharaj, you're really going off the deep end. Because these things are too far out. These things are not for a puppy brain. As Prabhupada said, puppy brain, what you couldn't understand with your puppy brain. So, to understand how this works requires more than a puppy brain. I told you before, the Prabhupada said, if you could see who you're associating with, you would faint. They didn't just mean the 6 Goswamis of Vrindavan, the Vaishnavacharyas. He meant all the so-called regular devotees. We can't say who they are, but Prabhupada could see the swarup of each and every single member devotee. But nobody ever dared to ask Prabhupada what their swarup was. He would burn them to ashes if they asked that. Foolishness. Sometimes he would say something like, you'll find out when you get there. Somebody who's not even free from sex desire, they want to know what their swarup is. But these things are going on, outside of our society. These things are going on. Some outside charismatic personalities are saying, if the Guru can't tell you what your swarup is, he's bogus. They say like that. Because they are offenders against Srila Prabhupada because they know that Prabhupada didn't tell his. He didn't want to take it cheaply, make all his disciples into sahajas.
तो वो जो है उसको बहुत ही निम्न मानते हैं। So, Rupe, Rupe, रूपे Rupe रूपे in the forms. उस रूप में Dvividha, द्विविधा two kinds. दो प्रकार के Avatara, अवतार incarnations. अवतार Balya, बाल्य childhood. बाल्यावस्था Pagunda, पौगंड boyhood. कुमारावस्था। So Balya and Pagunda, these are two famous stages of Krishna's manifest pastimes. तो बाल्य और पौगंड ये दो भगवान के लीलाओं में In बहुत ही Gokula, as the pastimes in Goloka and the pastimes in Gokula, they are not identical, they're different गोकुल flavors. में और गोलोक में जो लीलाएं होती हैं वो एकदम एक बराबर नहीं है, वो थोड़ी अलग है। There are no babies in Goloka Vrindavan. गोलोक में कहीं भी छोटे बच्चे नहीं हैं। You didn't know that? यहाँ पर ऐसा नहीं पता था? No babies in Goloka Vrindavan. कोई बच्चे नहीं होते गोलोक वृंदावन। Those kind of pastimes are going on in Gokula. ऐसी जो लीलाएं हैं वो गोकुल में हो रही है। Gokula means when Goloka descends onto the earthly plane, that's called Gokula. गोकुल का अर्थ है गोलोक जो है जब इस धराधाम पे अवतरण लेता है। Pastimes of baby Krishna and all that. Pastimes of baby Krishna, तो ये जो लीलाएं हैं जैसे बाल्य कृष्ण की, they're going in Gokula, not in वो Goloka. गोकुल में चल रही है, गोलोक में नहीं। There in Goloka, Krishna is eternally 15, Radharani is eternally 14. गोलोक में जो कृष्ण हैं वह लगभग 15 वर्ष के और श्रीमती राधा की 14 वर्ष की। They don't look 14 and 15 as they're standing on the altar. तो यहाँ विग्रह स्थान पे यहाँ खड़े हुए ऐसा लग नहीं रही है 15 और 14 वर्ष के हैं। But Vishwanath Chakravarti Thakur explains that great heroes appear to be 1.5 times older than their actual age. लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो बहुत ही प्रमुख लोग होते हैं वो 1.5 गुना लगते हैं अपनी असली उम्र से। So that means if Krishna is 15 as he's standing on the altar, he's 15 years old. It doesn't look 15. इसका अर्थ यह है कि जो विग्रह धरती यहाँ जब भगवान खड़े हैं तो वह 15 वर्ष के हैं लेकिन ऐसे लगते नहीं। Half again more than 15. 17, 15 plus half again, 7 more, right? 21 Huh? 21 21 or 22? 22 years. That's how they look, 22 in their early 20s. इसीलिए जो है वो 22 वर्ष के यहाँ लगते हैं जब वो यहाँ खड़े हैं विग्रह। Radharani is only 14. राधा रानी जो है केवल 14 वर्ष की। Half again is 7 more, 14. She's 21. So Krishna has to be at least 22. तो कृष्ण जो है वो लगभग 22 वर्ष के हैं, राधा रानी 21 वर्ष की लगती हैं देखने से। It's not my opinion, Vishwanath Chakravarti Thakur ये says. मेरा मत नहीं है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ऐसा If मत you have any doubt about that, you can take it up with Vishwanath Chakravarti Thakur. है। तो अगर आपको इस पे किसी चीज का संशय है तो आप जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से पूछ सकते हैं। So, Balya, childhood, and Poganda, these are two famous age groups for his pastimes in Gokula. बाल्य और पौगंड ये दो अवस्थाएं बहुत ही प्रमुख हैं जब भगवान गोकुल में आते हैं। Dharma, here's another meaning of Dharma. Dharma, धर्मा यहाँ पे अन्य characteristics of age. आयु के लक्षण Dui, द्वि two. दो Ta, त certainly. निश्चय Prakara, प्रकार two kinds. प्रकार। So, his Krishna's incarnations are of two kinds, namely partial and empowered. उनके अवतार दो प्रकार के हैं, आंशिक और सत्यावेश। He appears in two ages, वे दो अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, childhood and boyhood. बाल्य और पौगंड कुमार अवस्था। And Prabhupada explains these complexities of these expansions. तो प्रभुपाद जी के आगे तात्पर्य में इस जटिलता को The vilas forms are 6 in number. विलास रूपों की संख्या 6 है। Incarnation of 2 varieties, अवतार दो प्रकार के हैं, namely Sakyavish, empowered, शक्त्यावेश Anksavish, तथा अंशवेश partial. जो कि आंशिक है। These incarnations also come within the category of Prabhava ये अवतार भी प्राभव and Vaibhava तथा वैभव manifestations.
प्राकट्यों की कोटि में This was discussed in detail in the prior verse. ये इसके बारे में और बहुत तरीके से पिछले श्लोक में बताया गया है। Childhood and boyhood are two special features of the personality of Godhead, Shri बालक तथा Krishna. पवन भगवान श्री कृष्ण के दो विशिष्ट स्वरूप हैं। But his permanent feature is his eternal form as an adolescent youth. किंतु उनका स्थायी रूप जो उनका नित्य किशोर रूप है, That's what I just explained. Adolescent means teenager. जैसे मैंने अभी बताया था कि भगवान जो है वहाँ पे Krishna's eternally a teenager, and so is Radharani. तो कृष्ण जो है वो हमेशा से स्थायी रूप से वहाँ पे Because you see कुमार those- अवस्था में और राधा रानी। Just by looking around this world, we see that by the time young boys and girls are 15 years old, they're very much ready for romance. तो हम देखते हैं कि जब तक जो आज साधारण तौर पे बाहर की दुनिया में कि जब तक कोई व्यक्ति और स्त्री जो है 15 या इस कुमार अवस्था So they don't know में it. वह रोमांस के लिए तैयार हैं। Therefore, they're all desperately trying to imitate Radha and Krishna, but they don't know it. तो इसीलिए वह इतने उत्सुक है कि हम राधा कृष्ण को अनुकरण कर सके, लेकिन वह नहीं जानते। And our business is to educate them. तो हमारा कार्य है उनको समझाना You want to be eternally youthful? कि हम जो है हमेशा से स्थायी रूप से Prabhupada- ईश्वर को अपना सकते हैं। Prabhupada speaks on behalf of Krishna. प्रभुपाद जो है वो कृष्ण के प्रतिनिधित्व के तरह से बोलते हैं Give up your dirty dance and come dance with me. कि अपना ये जो खराब नृत्य है उसे छोड़िए और मेरे साथ आकर नृत्य कीजिए। Haribo. हरिबोल। That was weak. Haribo. Better. This dirty dance, we have to give it up. ये जो खराब नृत्य है हमें इसे छोड़ना है। But dancing in front of deities, that's not a dirty dance, that's a clean dance. लेकिन विग्रहों के सामने जो नृत्य करना है ये भी खराब नृत्य नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। That's pleasing to Radha and Krishna, Prabhupada, and all the acharyas. यह बहुत ही संतुष्ट करता है राधा कृष्ण और अन्य आचार्यों को। We've explained several times that the acharyas are watching this movement very closely. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आचार्यगण हैं वह इस आंदोलन को ध्यान से देख रहे हैं। They all have superpowers उन सबके पास बहुत शक्ति है from the spiritual world. आध्यात्मिक जगत से। I explained how Prabhupada said Narada Muni comes to the kirtan. That's why he told the devotees of London, make a vyasana for Narada Muni. तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि नारद मुनि है वो भी कीर्तन जब होता है तो वहाँ आते हैं, तो प्रभुपाद ने भक्तों को कहा था कि उनके लिए एक अलग से आसन लगाएं। Because I've told this before, but it's worth remembering, worth repeating. तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है अगर मैं इसको पुनः बताऊँ। Jamuna, the famous Jamuna, she was leading kirtan in Prabhupada's presence. यमुना माता जी जो है वह कीर्तन कर रही थी प्रभुपाद जी जब हम मौजूद थे तब। All of a sudden, Prabhupada took over the kirtan and interrupted her. और तभी जो है प्रभुपाद ने उनको अचानक से रोक दिया और प्रभुपाद जी गाने लगे। Seemed very peculiar. और ये बहुत ही अजीब था। You know, you all know she was an expert singer. और आप सब जानते हैं कि यमुना माता एक बहुत ही सुंदर गायिका थी। There was no fault in her kirtan. उनकी कीर्तन में कोई भी दोष नहीं था। Very sweet. She knew how to sing sweetly. वह जानती थी कि किस प्रकार बहुत सुंदर गाया जा सकता है। So later she asked Prabhupada, what was that all about? और फिर Because, उसके I mean, बाद में she was very, प्रभुपाद ऐसे क्यों किया? he was very conspicuous interrupting her kirtan. Just stopped her kirtan and interrupted. एकदम अचानक से ही आगे उनके कीर्तन को रोक दिया और खुद गाने लग गए। So she was thinking, well, that was pretty weird what happened, you know. तो वो सोचने लगी माता जी कि ये थोड़ा अजीब था, ऐसा क्यों किया प्रभुपाद ने? Prabhupada said, oh, Narada Muni, he came. प्रभुपाद ने कहा वो नारद मुनि आए थे। So Srila Prabhupada wanted to chant for the pleasure of Narada. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है गाना चाहते थे नारद मुनि की प्रशंसा की। That's the league we're in, by being followers of Srila Prabhupada. ये जो है श्रील प्रभुपाद के हम जो है अनुगत हैं, हमारा भी यही कार्य है। So we'll complete. The original personality Godhead, Sri Krishna, is always worshipped मूल this- भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव इसी सनातन in his eternal ईश्वर रूप में की जाती है। adolescent form or eternal teenage form. स्थायी रूप से जो भगवान किशोर रूप में है उसी में की जाती है। 15 and Radhika is 14. भगवान 15 वर्ष के श्री राधारानी 14 वर्ष। We explain, but Krishna looks at least 22. हमने बताया कि भगवान कृष्ण जो है Radha Mohan Gopal looks at least 22, and Radharani,
She looks at least और 21. मदन गोपाल जो है लगभग 22 वर्ष के लगते हैं, और राजरानी लगभग 21 वर्ष की। There you have it, Thakur's explanation of why. यहाँ ये जो है आप ठाकुर जो कृष्णाचार्य ठाकुर हैं उनके It also explains why when Krishna was only 10 years old and he entered into Mathura, वो ये भी बताते हैं कि वहाँ कृष्ण 10 वर्ष के थे तब वो मथुरा में प्रवेश किए थे। Bhagavatam explains that all the women were going crazy. भागवतम बताता है कि जितने भी वहाँ स्त्रियाँ थी सब पागल हो गई थी। They all wanted a relationship with him. वे सब संग करना चाहते थे कृष्ण के साथ। 10 years old. 10 वर्ष थे भगवान उस समय। So that means that he looked 15. इसका अर्थ है कि वो उस समय 15 वर्ष के लगते थे। Very macho. Macho is Italian and been adopted in English. Very buff, you know. तो वो जो है बहुत ही Well, he was just only a short time later he'd be killing Mushtika, और कुछ ही समय में वो जो है मुश्तिक चांद the giant Kuvilyapida elephant. और एक इतने बड़े जो हाथी कोल्य पेड़ उसको मारने He वाले just cut off the head of the watchman with his finger. और जो वहाँ पे पहरेदार था उसका केवल अपने अंगुली से ही जो है उसका सर काट लिया। So the ladies are watching all of this. तो वहाँ की जो स्त्रीगण है वो सब देख रही थी ये सब। Oh, so here we see that the ladies of Mathura entered into the mood of the gopis. यहाँ हम देखते हैं कि जो भौतिक संसार में रहने वाली स्त्रियाँ उनका जो भाव है एकदम गोपियों के भाव की तरह होता है Conjugal. जो प्रेममयी है। Oh, ah, oh, it's so beautiful. Oh. वो कहने लगे कि कितना सुंदर है ये दृश्य। We see in the narration of Kubja, हम जो है कुब्जा के जब वहाँ she wanted to have a relationship, a romantic relationship with Krishna. तो वह जो है संबंध स्थापित करना चाहते थे कृष्ण के साथ। Still, he was only 10 years old और जबकि उस समय वो 10 वर्ष के थे। by external calculation. मतलब बाहरी रूप से अगर But he looked 15 and very, very handsome. लेकिन वो दिखने में 15 वर्ष के थे जो कि बहुत ही सुंदर दिखते थे, वरिष्ठ दिखते थे। So Krishna glanced around. तो इसीलिए कृष्ण ने उनको He saw all his coward boyfriends were watching. तो जब उन्होंने कृष्ण को देखा तब उन्होंने बाकी जो उनके मित्रगण थे उनको भी देखा, वो उनको देख रहे थे। He has to tell her, later. तो इसीलिए श्री कृष्ण को बोलना पड़ा कि ठीक है बाद में बात। He was embarrassed. तो वो थोड़े शर्मा गए। He knew what she wanted, you know. तो कृष्ण समझ गए कि उनको क्या चाहिए। So there we see, there's a sneak peek into the aspects of Krishna's eternal personality. ये जो है छोटा सा दृश्य मैंने बताया कृष्ण की नित्य लीलाओं के अंदर में। Jai Guru Sri Baba ki jai. जय Granchana Shima Bhagavatam ki jai. Nitai Gopavanandi Hari Hari Bolo.